Hello students, today we will start polar equation of conic. Beta, first we discuss polar coordinates. Beta, in rectangular Cartesian system, we dealing with two perpendicular lines. You know this one is x-axis, y-axis, मान लो this point is xy, then draw a line, this one x, this one y. This one is called origin. But in polar coordinate system, we take one line in a plane. That is called this. ठीक है बेटा? This one is called a national line or polar axis. ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਪੋਲਰ ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੋਲ okay, then rotate angle, some angle, we will rotate angle theta in anti-clockwise direction. If we rotate in clockwise direction theta negative, anti-clockwise direction theta positive. This one is called vectorial angle or polar angle. बेटा इसमें की बोलते हैं अपन विक्टोरियल एंगल या की बोलते हैं बेटा पोलर एंगल एंड दिस लाइन इज कॉल्ड दिस जिन्ना अपन एंगल रोटेट करते हैं दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर. ठीक है ओके और फाइनल लाइन और पोलर रेडियस. ठीक है बेटा लेट दिस लेंथ OP this one equal to r, so this coordinates is r theta, this one is called polar coordinate. बेटा okay, a single line given है बेटा अपन, this one is called initial line या polar axis, this one is called pole. If we rotate anti-clockwise direction theta positive, if we rotate clockwise then theta negative, and this one is called radius vector या polar radius. Let this one is r, then इस coordinates की हो गए बेटा पलवे r theta. Okay, clear a point. So बेटा this is called pole, this one is r theta p, and coordinates of pole, this one is 0 theta. Because बेटा थीटा एनी एंगल रोटेट बेटा एट दिस पॉइंट पर रेडियस कितना हो गया पुत्र 0 एट पोल रेडियस की हो गया बेटा 0. सो आर अपन इसके कोऑर्डिनेट्स के रखांगे 0 थीटा. ओके नेक्स्ट बेटा जेडे देखो जिਵੇਂ x बेटा बड़े अगेन 3-4 पॉइंट है. सो दिस वन इज 4, दिस वन इज 3. इन कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम rectangular Cartesian system, this one is unique. बेटा ये पॉइंट है यूनिक है, बट इन पोलर कोऑर्डिनेट r is unique but theta is not unique. This point है infinite points. Please देखो, you see if we rotate again at this one point, so r radius, then this coordinates is r, total angle कितना हो गया 2 pi plus theta, again r 4 pi plus theta, r 6 pi plus theta. So r is unique, length unique, but theta is not unique. So we have infinite number of points. So clear beta, in Cartesian system in xy plane this point is unique. ठीक है, but r theta is this point in polar coordinate not unique. So बेटा clear है. So all the coordinate की होंगे बेटा 0 theta. Next for negative value of देखिए बेटा polar axis, this coordinate is let r. ठीक है, this coordinate is r theta
OP डैश OP डैश की लेंथ सेम है, लेट किस दे इक्वल है बेटा R, सो दिस कोऑर्डिनेट इज माइनस R, ओके। सो ऑपोजिट साइड जे दिस वन कोऑर्डिनेट्स की R थीटा, तो ए पॉइंट की आएगा बेटा माइनस R थीटा, सो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स की आएंगे माइनस R थीटा, फिर वही पॉइंट बेटा इसमें आप इस तरह भी कर सकते, देखो बेटा मैं एंगल रोटेट करता बेटा, कितना एंगल हो गया पाई प्लस थीटा हो गया ना, देखो बेटा दिस एंगल इज पाई प्लस थीटा, ये कोऑर्डिनेट्स की बन सकते हैं R पाई प्लस थीटा, सो देखो बेटा ये एंगल कितना रोटेट करके देखो बेटा थीटा, नेक्स्ट पाई प्लस थीटा, सो बेटा इस ना एंगल बन रहा है, सो इस दे लेंथ कितनी R, तो इस दे कोऑर्डिनेट्स की आएंगे बेटा R पाई प्लस थीटा, देखियो बेटा एक मिनट अगेन O की है पोल, लेट दिस एंगल इज, ठीक है ये अपने बना है बेटा, लेट 5 पाई बाय 6 कितना एंगल है बेटा 5 पाई बाय 6, लेंथ अपने लिख ली बेटा OP डैश, लेट इस दी लेंथ है क्या बेटा OP डैश ते OP दी लेंथ है क्या लेट 4, अगेन वैसे लिख ली बेटा 4, इस दी लेंथ कितनी है 4, इस दी लेंथ भी कितनी है 4, ये एंगल कितना आ रहा है बेटा 5 पाई बाय 6, तो ये पॉइंट कितना आएगा 5 पाई बाय 6, तो ये कितना आएगा बेटा -4 5 पाई बाय 6, क्लियर है बड़ा पॉइंट, तुम देखो बेटा पूरा एंगल कितना आ रहा है पाई, इसका थीटा, इस दे कोऑर्डिनेट्स की आगे r थीटा, तो इस दे कोऑर्डिनेट्स की आगे बेटा ये नहीं है बेटा, देखो दिस वन, इस दे कोऑर्डिनेट्स की आगे -r थीटा, ठीक है बेटा, इफ देखो बेटा इस दे है 4 जा R लिख लो बेटा, नो प्रॉब्लम R 5 पाई बाय 6, ओके 5 पाई बाय 6 नहीं बेटा 7 पाई बाय 6, ओके, देन इस दे कोऑर्डिनेट्स की आएंगे बेटा -R 7 पाई बाय 6, क्लियर है बेटा पॉइंट, सो मैंने बेटा ये रख दिया, सो बेटा ये नेगेटिव वैल्यू ऑफ R, जो देखो रे एंगल थीटा इस तरह वाले इस दे कोऑर्डिनेट्स की होंगे r थीटा, इस दे -r थीटा, ओके, जो देखो बेटा इस दे r 7 पाई बाय 6 इस एंगल बार है, तो इस दे जो ऑपोजिट डायरेक्शन जो होगा -r 7 पाई बाय 6, जो देखो बेटा हमने ये एंगल रोटेट करता है, कितना हो गया पाई प्लस थीटा इस ना बार है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स की होंगे r पाई प्लस थीटा, ओके, इस दे की होंगे बेटा -r, ओके पाई प्लस थीटा, क्लियर है बड़ा पॉइंट। नेक्स्ट इफ एंगल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये देखो बेटा एक्स पोल लेफ्ट, बेटा एंगल रोटेट करता है मैंने कितना दिस एंगल 5 पाई बाय 6, लेंथ रेडियस अपने r कंसीडर कर ले, तो इसके कोऑर्डिनेट की होंगे r माइनस, बिकॉज रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो r इंटू -5 पाई बाय 6, सो बेटा इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स की होंगे -r -5 पाई बाय 6, ओके। नेक्स्ट बेटा फॉर एग्जांपल बेटा अपने प्लॉट करना है ग्राफ, सॉरी पॉइंट्स, फर्स्ट 2 पाई बाय 3, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा रेडियस 2 एंगल पाई बाय 3, सो दिस वन पोल, दिस वन इज पोलर एक्सिस, इज द लेंथ कितनी है बेटा 2, सो दिस कोऑर्डिनेट इज 2 पाई बाय 3 रोटेट एंगल, ओके बेटा। नेक्स्ट -3 5 पाई बाय 4 बेटा, फर्स्ट ड्रॉ पोलर एक्सिस O, ठीक है बेटा, O इज पोल, -3 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 पाई माइनस पाई प्लस पाई बाय 4 कितना बन गया 5 पाई बाय 4 बेटा, सो दिस वन this, so a पॉइंट किया गया बेटा 3 5 पाई बाय
4 polar radius 3 ਤੇ angle 5 pi by 4 okay then this polar coordinates this one a point ਕੀ आएगा बेटा -3 5 pi by 4 okay बेटा so ये सी बेटा next find the next example बेटा find the reflection of the point r theta in the pole find the reflection of the point r theta ठीक है in the pole ਆਪਾਂ रिफ्लेक्शन देखनी है बेटा अबाउट द पोल ठीक है r theta so this o polar axis and this coordinates is this angle is theta anti-clockwise direction this length is r this form is polar coordinates is r theta okay this one is r theta then is the reflection beta this one p dash so length same है beta op dash this one is minus r theta okay बेटा ये भी पॉसिबिलिटी है देखो दिस एंगल एक ही आ गया बेटा आपको लगे आर रेडियस बिकॉज एंगल बन गया बेटा नाल कितना आ गया एंगल कितना हो गया पाई प्लस थीटा ओके सो इन जनरल आप इसमें की लिख सकते हैं बेटा पॉइंट पी डैश माइनस आर तो अगे कितना प्लस आर -1 दी पावर n प्लस 1 आर ओके थीटा प्लस n पाई देखो बेटा मैंने ये ले लिया इफ n is 0 then n 0 minus r theta n 1 plus 1 2 बेटा ये के 2 pi 3 pi 4 pi so बेटा ये बन जाएंगे नेक्स्ट फाइंड द क्लियर है बेटा फाइंड द रिफ्लेक्शन अबाउट नेशनल लाइन ठीक है बेटा अपने रिफ्लेक्शन देखने बेटा अबाउट नेशनल लाइन सो दिस वन इज पोलर एक्सिस दिस कोऑर्डिनेट इज देखो बेटा दिस एंगल इज थीटा इस दे कोऑर्डिनेट की आ गया बेटा आर थीटा सो दिस वन रिफ्लेक्शन सो दिस वन एंगल इज माइनस थीटा सो ये कोऑर्डिनेट की आएंगे बेटा आर माइनस थीटा पी पी डैश बेटा आप और की कर सकते हैं बेटा दिस वन जे एंगल को तो देखियो अगे रोटेट कर लिया अपन दिस थीटा दिस वन इज पाई माइनस थीटा आर पाई माइनस थीटा तब बेटा इसके कोऑर्डिनेट की होंगे माइनस आर पाई माइनस थीटा ओके ये बन गया देखो माइनस आर पाई माइनस थीटा सो बेटा आप लोग क्या आ सकते हैं आर माइनस थीटा माइनस आर पाई माइनस थीटा इन जनरल बेटा आप की लिख सकते हैं -1 दी पावर ठीक है बेटा n आर माइनस थीटा प्लस n पाई बेटा n नो 0 सो फर्स्ट n नो 1 पुट किया बेटा माइनस आर माइनस थीटा प्लस पाई ठीक है बेटा सो बेटा इस तरह आप की कर सकते हैं बेटा पोलर कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच बेटा नेक्स्ट वीडियो वी कंटिन्यू पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक